Assalamu alaikum. My dear 10th class students, here I am come in front of you to share the information about physical science of 10th class of board examination. A lot of students are confusing about the what is the examination pattern because you are going to write the board examination first time in your life. So here I came in front of you to share the to clear your doubts regarding the physical science examination in the SSC board examination. In this video, we are discussing the what is the examination pattern, how much of time they given to you, and how many sections and how many marks, everything regarding the physical science of board examination of 10th class, right? So here we see this is the Telangana 10th class board examination physical science examination pattern, right? So in this, first of all we discuss about the time, about the time. How much time the examiner given to write the examination. So for the physical science, they give the 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes for whole examination. So in that examination, we have two sections. That is the part A and part B. There are two sections, part A and part B. So for part A, they given 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 minutes. And for the part B, they give only 15 minutes. Only 15 minutes. Right? And important thing is, they give the part B after the completion of part A. That means after 1 hour 15 minutes, completion of 1 hour 15 minutes, they give to you part B. After the 1 hour 15 minutes, they give the part B to you. Right? So, another important thing is about sections in the part A. How many sections are in the part A? In the section A, the first section, the first section have three questions. The first section have three questions, and each questions have 2 marks. Each question have 2 marks. That means 6 marks. In part A, section 1, you have allotted the 3 questions. On the 3 questions, you have to write all 3 questions. Each question carry 2 marks. That means section 1 have the 6 marks. Right? So then section 2. Section 2. In this, you have remaining 3 questions, but each question carry 4 marks. Each question carry 4 marks. Each question carry 4 marks. That means 3 into 4 is equal to 12 marks. In the second section, in the part A, the total questions are 3. You have to write all 3 questions. You have to attempt all 3 questions. Each question carry 4 marks. That means section 2 have 12 marks. Then we go to the
section 3. Section 3. In that, they are giving 3 questions. Each question carry 6 marks. Each question carry 6 marks. But there is any choice in the section 3. That means you have to write in this section only 2 questions. Only 2 questions. You have to write only 3 questions in the third section. In third section, they give the 3 questions, but you have to write only 2 questions. That means 2 into 16 is equal to 12. That means 2 into 6 is equal to 12. Right? So, this is the marks allotted, 30 marks. How many marks? 30 marks. Right? 4, 8, 10. Right, 30 marks. So, we are allotting the 30 marks for the part A. Section A, 6 marks. Section 2, 12 marks. Section 3, 12 marks. But they give the 3 questions. In the section 3. But we have to write only 2 questions, beta. We have to attempt only 2 questions. Right? So, part A have how many marks? Part A is allotted 30 marks. Right? Then remaining 10 marks belongs to the part B, that is MCQ, multiple choice questions. They give the one question and give the 4 options. Under that questions, he give the 4 options A, B, C, D. Whatever the right answer, you have to allot it. Another important thing you have to memorize, beta. Your part B should be right in your part B paper. In your examination hall, the invigilator is given the part B separately to you. So you have to write the part B separately and tag that part B to our main answer sheet. Question paper you have to kept it, but part B you have to tag with your part A. Clear? You should not write the part B in your answer sheet. You have to write the part B whichever giver give to which part B should be give to you. You should be write that A, B, C, D on your part B, which is given the separate to you in your examination, and that paper you should be tagged to the part A. You should not keep that part B with you, and you should not write the answers A, B, C, D in your answer sheet. You have to write the answers in part B paper. Right? Then next. So total marks are total marks $40, part A 30, part B 10. Right? So this is your examination pattern, beta. Within a 1 minute, I will complete it with the repeat it. Your total marks in the examination of physical science, theory marks, that is the 40. In that,
you have to write answers for 30 marks and part B for the 10 marks, and you have to give 1 hour 15 minutes for part A and 15 minutes for part B. In that 15 minutes you have to write 10 multiple choice questions. Understood beta? So be understood the your examination pattern. You have just 1 hour 30 minutes. On that you have only 1 hour 15 minutes to write how many questions? 8 questions. How many questions? You have to write question and answers 8. They given the 9 questions. They given the total 9 questions in our part A. They given the 9 questions in the part A. They given the total 9 questions. Total 9 questions. But we have to write only, we have to give the answers for 8. अंडरस्टूड बेटा? एक बार और आपको समझ में आने के लिए रिपीट करता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। आपको आपके एग्जामिनेशन में फिजिकल साइंस के लिए 40 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर आता आपको, जिसके अंदर आपको 1 घंटा 15 मिनट पार्ट ए के लिए है, 15 मिनट पार्ट बी के लिए है। उस 1 घंटा 15 मिनट में आप लोगों को पूरे 9 क्वेश्चन अलॉट होते बेटा। 9 क्वेश्चन में से अपन सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन करना है। वो 8 क्वेश्चन आपको पार्ट ए के 3 पूरे लिखने का है, सॉरी सेक्शन 1 के पूरे लिखने का है, सेक्शन 2 के पूरे लिखने का है। सेक्शन 3 में हमको 3 क्वेश्चन देता है, जिसमें से हमको सिर्फ 2 लिखना है, जिसमें सेक्शन 1 के लिए 6 मार्क्स, सेक्शन 2 के लिए 12 मार्क्स, सेक्शन 3 के लिए 12 मार्क्स। टोटल पार्ट ए के लिए 30 नंबर, राइट। बचे हुए जो 10 नंबर है उसके लिए फिर पार्ट बी है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको ABCD दिया जाएगा, जिसको आपको ABCD उस पेपर में फिलअप करना है। अच्छी तरह याद रखिए कि आपकी आंसर शीट जो आपको पेपर दिया जाएगा बुकलेट, उसमें पार्ट बी लिखना नहीं है। आपको एक सेपरेट पार्ट बी का पेपर दिया जाएगा, उस सेपरेट पार्ट बी में आपको आपके आंसर लिखना है। लिखकर वो पार्ट बी पेपर को पार्ट ए के साथ टैग कर देना है। पार्ट ए आप क्वेश्चन पेपर रख ले सकते, लेकिन पार्ट बी आप लोगों को उसी पेपर ए के सेक्शन ए के साथ आंसर शीट के साथ टैग कर आपको दे देने का है। मेरा मकसद ये था ये वीडियो बनाने का कि आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम लिख रहे, तो आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने का मेरा इरादा था कि आप जब जाएंगे तो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पेपर कैसा रहेगा, कितना वक्त रहेगा। आपके लिए 1 घंटा 15 मिनट पार्ट ए के लिए है, 15 मिनट पार्ट बी के लिए। 15 मिनट में आपको 10 जवाबात का आंसर देना है, ABCD। इसमें आपको 8 क्वेश्चनों का जवाब देने का है, 8 सवालात का जवाब देने का है। उम्मीद करता हूं आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। इंशाल्लाह इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा अगर आप लोग चाह रहे तो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर किस तरह बनाते हैं, आपका सवालात किस तरह पूछे जाते हैं फिजिकल साइंस के। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एज पर द एकेडमिक स्टैंडर्ड। यानी कि हमारे जो फिजिकल साइंस 10th क्लास के अंदर 12 चैप्टर्स जो है, उसमें से ये 8 क्वेश्चंस कैसा लेते है। 12 चैप्टर, वो 12 चैप्टर में से 8 क्वेश्चंस कैसा निकालते वो लोग, उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।